Hello friends, we start off the new year with episode number 15 of 208 of our bilingual video series Technology for All in our YouTube channel EcoThrust. We have just finished the first chapter of Internet of Things and we go to the next chapter, Artificial Intelligence. But before we do that, we must clear 3 doubts which are there in the minds of the people and are being hotly debated by intellectuals, academics, celebrities, and importantly, the most powerful politicians across the world, including the US Senate and the European Union. So what are these 3 questions? The first question is generative AI harmful to mankind? The second question is, can generative AI violate patent rights and Copyright Act and illegally transfer documents to their source? Thirdly, should the growth of generative AI be curbed by legislation? So these are the 3 questions which is very hotly being discussed across the world, and we will look at them one by one in our video sessions. Now, the first question we will answer in this video session, and we will tell you that artificial intelligence and generative AI in chatbots is not new. It was there 70 years ago when computers were first discovered, and it has been there ever since. So why suddenly is the fear-mongering? Well, the fear-mongering is not sudden. Right from the day artificial intelligence was introduced, humans, especially academics and intellectuals, did not like the idea. Nobody liked a competitor to human intelligence. So there was a lot of storytelling, there was a lot of fear-mongering. We know, we will see later in the book, what fictions and what films were made depicting AI as villain. But before that, we will tell you that for 70 years, nothing happened that one could justify the statement that AI had subverted mankind or even tried to subvert them. So there was nothing to justify the fear. So why then does it still exist? Now let us look at what happened in the last decade. Around 2014, a machine learning algorithm formulated called Generative Adversarial Networks, GANs, accurately authenticated audio and video clips of humans. The first high-profile victim of this technology, called deepfakes, was none other than the Republican candidate in the 2014 elections, who later on went to become the presidential candidate, Donald Trump. The videos were altered very cleverly, and only 5% of the speeches were altered, so that nobody could make out that they were changed. But it made him look like a fool and an imbecile, using words which were totally inappropriate in crucial opinion pieces. When Trump won the presidential elections, the Republicans used the same deepfakes to create such videos of opposition. So the politicians and celebrities became prime target of deepfake technology, which has grown more and more sophisticated and difficult to detect by the day. Then, around 220, OpenAI tested the skills of generative AI in multiple formats, and by 2022, ChatGPT, with $10 billion funding from Microsoft,
started stoking fears of generative AI taking over the world and, importantly, being the number one in AI ahead of Google. Now, a war between the tech giants has started. But Google was far ahead, and this did not affect its position as the search engine leader. But at the same time, ChatGPT became very popular with developers, and Microsoft went ahead, and there was a media hype, there were PR agencies and newspapers writing stories about how ChatGPT was taking over the world and would ultimately be the Google killer. Not quite, said Jan LeCun, VP and Chief AI Scientist at Meta, another global software giant. He says that I don't think there's any company that is significantly ahead of others. But they, at OpenAI, have been able to deploy their systems in a way that they have a data flywheel. So they accumulate data quickly and faster than anybody else. And they have better outputs. But I don't think those systems in the current form can be fixed to be intelligent in the ways we expect them to be, says LeCun. He explains that data systems are entertaining and impressive, but not really useful. This is because to be useful, they have to make sense of real problems of the people, help them in their daily lives, and if the traditional assistants are able to completely do that work, only then they will be useful. But since generative AI in its current form is a great data gatherer, but a poor data user to solve real people's problems like all other artificial intelligence tools, they are far away from being a Google killer or even mildly harmful to mankind. So our answer to the first question is no, generative AI is not harmful to mankind. Just because it can collate data and churn out new texts, it cannot put the same to use intelligently to solve human problems, and human intelligence still has to manage that. So, generative AI or any other form cannot work independently of humans to either harm or help them. We will now look at the second question on the copyright, but later. Now, first, we will talk to our Hindi viewers and let them know about generative AI. Till the next session, goodbye. Thank you. नमस्कार दोस्तों, इस नए साल में हम आपको हमारा वीडियो सेशन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इन इंग्लिश एंड हिंदी के 15वें सेशन में स्वागत करते हैं, जो कि हमारा YouTube चैनल इको ट्रस्ट में है। और ये हमारे किताब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर लिविंग पे आधारित है, जो कि राउटलेज यूके द्वारा सितंबर 2023 में प्रकाशित। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स या चीज़ों का इंटरनेट के बारे में। वो पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया और हम अब दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर शुरू करने के पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 3 बड़े मुद्दे आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि सारे दुनिया के लोगों को आज एकदम भयभीत करती। इसमें एकेडमिक्स हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें पॉलिटिशियंस हैं, और सबसे पावरफुल देश के पॉलिटिशियंस हैं, यूएस सेनेट के, यूरोपियन यूनियन के, सारे लोग भयभीत हैं 3 प्रश्न से। पहला प्रश्न, क्या जनरेटिव एआई ह्यूमंस के लिए
हानिकारक है? दूसरा प्रश्न, क्या जनरेटिव एआई पेटेंट राइट और कॉपीराइट को वायलेट कर सकता है और इलीगली कॉपी कर सकता है? और तीसरा प्रश्न, क्या जनरेटिव एआई जो आज के दिन में जिसके बारे में चर्चा सबसे ज्यादा है, क्या वो उसको हमें रोकना चाहिए? तो ये तीनों क्वेश्चन के अलग अलग उत्तर हैं। हम इस सेशन में आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर देंगे, पर उत्तर देने के पहले भी हम उसके प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और ये क्वेश्चन कहाँ से आया और कैसे आया इसके बारे में बताएंगे। तो जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों नए नहीं है। चैटबॉट में जनरेटिव एआई करीब 70 साल पुराना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 70 साल पुराना है, कंप्यूटर्स भी 70 साल पुराना। तो ये मुद्दा आज क्यों शुरू हुआ? इतना भय आज क्यों शुरू हुआ? ये भय आज नहीं, ये बहुत साल पहले से चल रहा है और कहानीकार और फिल्म बनाने वाले ने कई फिल्में किया हुआ है एआई के ऊपर। क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे खत्म कर देगा और कैसे दोनों के बीच में लड़ाई होगा और ह्यूमंस हार जाएंगे? पर ये भय 70 साल से कोई भी इसका सबूत नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है। तो फिर आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ कि 10 साल पहले 2014 में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में एक फॉर्मुलेशन हुआ जिसको कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या गैन्स। वो प्रोग्राम जो है वो हमारे ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स को एक्यूरेटली डिपिक्ट कर सकता था, मतलब उसको एक्यूरेटली अनुकरण कर सकता। और ये अनुकरण को डीप फेक कहते हैं। और ये जो है सबसे पहले प्रयोग हुआ रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब वो इलेक्शन में 2014 में खड़े हुए थे और उनके वीडियोस को लेके उसमें छेड़खानी की गई और 90% वो वीडियोस उनके ओरिजिनल थे। सिर्फ बीच बीच में कुछ शब्दों को बदल दिया गया था और जिसे किसी को पता नहीं चला और ऐसे लग रहा था कि वो एकदम बेवकूफ़ है और उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया अपने विपक्ष के विरुद्ध और ये टेक्नोलॉजी पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के ऊपर काफ़ी प्रयोग में आया पिछले 10 साल। अब 2020 में ओपन एआई करके एक स्टार्टअप ने एक चैटबॉट बनाया जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। और वो चैट जीपीटी 2022 तक इतना उन्नत हो गया कि उससे हम टेक्स्ट, वीडियोस और इमेजेस, ड्राइंग्स वगैरह सारे हम पहले के डेटा लेके उसको नया रूप दे सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा हो गया कि हमारे जो किताब जो लिखे गए हैं और जो हमने इतना मेहनत करके इतना कॉपीराइट एक्ट बनाया है वो सारा ठप पड़ जाएगा अगर ओपन एआई ने ये काम कमर्शियली शुरू कर दी। तो यूएस के ऑथर्स गिल्ड ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में एक लिटिगेशन किया, क्या उनको रोक दिया जाए। पर माइक्रोसॉफ्ट जिसने $10 बिलियन लगाया था उसको गूगल के सर्च को मात देना था। तो उसने उठा के जितने डेवलपर्स थे उनके साथ चैट जीपीटी को फेमिलियराइज करने लगा और उसने न्यूज़पेपर और पीआर एजेंसीज यूज़ करके एक बहुत बड़ा कैंपेन किया कि चैट जीपीटी सारे लोगों को परास्त कर देगा और वही पहला रहेगा और वो गूगल को भी खत्म कर। फिर ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक तीसरा कंपनी जो है हमारा सॉफ्टवेयर जायंट मेटा, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एआई साइंटिस्ट है यान लाकुन कहते हैं क्या आज के दिन में कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी से इतना आगे नहीं है क्या एक दूसरे को खत्म कर। पर यह है कि ओपन एआई ने कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाए हैं जो कि उनको एक एडवांटेज मिलता है, वो डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर, और वो एडवांटेज जरूर है उसके पास जो कि दूसरों के पास नहीं है।
पर वो जो सिस्टम्स, वो कोई आज के दिन में कोई भी तरीका नहीं है कि वो सिस्टम्स लगाए जाए हमारे ह्यूमंस के नेसेसिटी के बारे में यूज कर। मतलब ह्यूमन नीड्स को अभी भी उस डेटा से शायद कोई फायदा ना हो, और वो बहुत इम्प्रेसिव है वो डेटा कलेक्शन और उस टाइप का टेक्स्ट क्रिएशन, बट वो एक्चुअली यूजफुल नहीं है, क्योंकि यूजफुल होने के लिए एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा वो एआई डेटा को, और वो कर नहीं सकती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसलिए ये बात गलत है, और ये बहुत अच्छा, हम भी यही कहते हैं कि एक बहुत अच्छा डेटा गैदरर होना मतलब ये नहीं है कि वो डेटा को यूज कर सकता है सॉल्व करने के लिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो कि बिजनेस सॉल्यूशंस। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, और जनरेटिव एआई कोई भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंच सकता, और ना ही उसे अपना फायदा पहुंच सकता, क्योंकि वो कोलेट कर सकता है डेटा। इसका मतलब ये नहीं है उसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर, वो ह्यूमंस के अलावा वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अभी अगले सेशन में दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि कॉपीराइट और पेटेंट वायलेशन के बारे में चैट जीपीटी का रोल क्या है और उसको क्या करना है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बाय बाय।